Hi guys, welcome to my channel. In this channel we provide the in-depth knowledge of different programming languages which differentiate you with others. In our series of C++ programming, today we are going to discuss something known as static member of a class. We have already discussed what is class, what is object, what are instance variable, what are data member, what are member function in the previous classes of C++. Today we are going to discuss something known as static members. Static members means static data members as well as member function. Now let's start. Try to concentrate. A static data member, whether it's a data member or a member function, a static data member is available only within the class, but it continues to live till the program execution doesn't come to an end. What does it mean? The life cycle of a static data member is till the program execute, but the life cycle of the instance variable is depending upon the scope of the object that we have already discussed in C classes. What is storage classes? A static data member is available only within the class, but it continues to live till the program execution doesn't come to end. In that sense, a static data member is similar to the ordinary static variable. However, their utility is different. While a normal static variable is used to retain information between calls to the function, static data members of a class is used to share information among the object of a class. The normal static variable is used, as we have already used in C language. Static variables are used to retain the information between the function calls. Why? Because if we are not declaring a variable with a static storage class, what happens as the control goes out of the scope, this local variable dies. But if we preceded static at the time of declaration of any variable, so that life cycle of that variable will be till the program execute. Same thing is applicable in C++ static members also. However, their utility is different. दोनों के use अलग अलग है. एक static variable क्या काम करता है? यूज टू रिटेन इंफॉर्मेशन बिटवीन कॉल्स टू द फंक्शन, और दूसरा स्टैटिक डेटा मेंबर क्या काम करता है? स्टैटिक डेटा मेंबर ऑफ अ क्लास इज यूज टू शेयर इंफॉर्मेशन अमंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास. मीन्स देयर विल बी अ सिंगल कॉपी ऑफ दैट स्टैटिक वेरिएबल विच विल बी शेयर्ड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज आपके दो ऑब्जेक्ट हैं. सपोज दिस इज योर obj1 and this is your obj2. Now suppose this is your instance variable, this is your instance variable. Now this is 10 and this is 20. Now this object cannot access this num and this object cannot access this num. Why? Because this num is declared under the private section of this class. But what I want that there will be a single variable which will be shared by this object as well as this object. Means if this object manipulate this variable value to 10, it should reflect to this object. If this object manipulate this value to 10 to 20, so it should reflect to this object. So this can be achieved by static data member of a class. How we can achieve this? Let's start. Static data member of a class is used to share information among the objects of a class. The principal reason behind static member variables are supported by C++ is to avoid the need of a global variable. This can be achieved by using global variables. We can declare a global variable. What a global variable? Any variable which is declared outside the function, it becomes a global variable and it is accessible to the complete program. But the problem with the global variables is we cannot restrict the access to a particular place. मतलब अगर एक बार आपने global variable define कर दिया तो it is accessible to the complete program. लेकिन अब हम क्या चाहते हैं कि कोई एक ऐसा variable है जिसको particular एक class के object ही access कर सकें और दूसरी class के object उसको access नहीं कर सकें, तो हमारे पास option क्या है? Static data member. How? Let's see. By default it is initialized with 0, but we can assign any value to the static data members. Now here we are having a class called sample, int count, int num. These are two data members, but count is declared with a
keyword called static. What we are writing? Static int count. Now this become the static member of a sample class, and this num is non-static member or a instance variable. What does it means? कि जितने ऑब्जेक्ट बनते जाएंगे उतने नम की अलग अलग कॉपी बनते जाएगी, but there will be a single copy of this count which will be shared by all the objects of a particular class. Which class? Sample class. Now see here, we are having public void show data, cout less than num, and cout less than count. Fine. Show data is displaying the value of num and count. Num is a instance variable, whereas count is a static variable. In get data, we are receiving the value in x. With the x, we are initializing the num, and count plus plus, we are incrementing the count. Now we are having static member function also. How we can declare a static member function? With a keyword called static void get count. Now get count becomes a static data member of a sample class in which we are displaying cout count की value और cout num error आएगा. ठीक है. This is how we can define the static member of a class. Why? Because जो num है, देखो ध्यान से देखो, जो num है उसके लिए ऑब्जेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट बनेगा तो नम के लिए स्पेस एलोकेट होगा. जितने ऑब्जेक्ट्स बनते जाएंगे उतने नम के लिए स्पेस एलोकेट होगा. बट काउंट के लिए एलोकेशन कब होगा? बिकॉज दिस इज व्हाट, दिस इज क्लास डिक्लेरेशन, और क्लास डिक्लेरेशन से कभी भी स्पेस एलोकेट नहीं होता. स्पेस कब एलोकेट होगा? जब उसका आप ऑब्जेक्ट बनाओगे. लेकिन ऑब्जेक्ट जब बनाओगे तो सिर्फ नम के लिए स्पेस एलोकेट होगा. Getting my point? Because there will be a single copy of this count which will be shared by all the object of a sample class. तो उसको अलग से आपको क्या करना पड़ेगा? Define करना पड़ेगा. How we can define? At the end of the class, int data type, sample, class name, and then colon scope resolution operator, count equal to 0. By default it is initialized 0, but you can assign 10, 20, whatever requirement is there. But here we are initializing with 0. Now in main function, what we are doing, sample obj1 and obj2, we are creating two objects of the sample class. We are calling object1 dot get data 10. 10 will be come down to this place, num equal to 10. अब ये num किसका है? No doubt this num belongs to object1. This is equivalent to this. We have already discussed in the this pointer class. Means whenever we call a non-static member function of a class, an address of the object1 will be passed implicitly and received in the this pointer. ठीक है ना. तो यहाँ पे पहले क्या होगा? end of obj1 10 पास होगा. this will hold the address of obj1. तो obj1 के num के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा? 10. here we are making diagram, num equal to 10. then obj2 dot get data 20. This 20 will be passed to get data. Now this holds the address of obj2. Now this num belongs to obj2. But this count is not belonging to object1 or object2. Why? Because there will be a single copy of this variable which will be shared by all the objects of a particular class. Fine. इसलिए हमने यहाँ देखो object1 बनाया, इसके अंदर नम अलग है, object2 बनाया, इसके अंदर नम अलग है. तो 10 यहाँ पे स्टोर हो गया, 20 यहाँ पे स्टोर हो गया. काउंट की कॉपी कितनी है? सिंगल है. सिंगल कॉपी शेयर्ड बिटवीन ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास, काउंट 2. तो देखो जैसे आपने ऑब्जेक्ट 1 डॉट गेट डेटा किया, काउंट की वैल्यू क्या? 0 से क्या हो गई? 1. सेकेंड बार आपने क्या किया? ऑब्जेक्ट 2 डॉट गेट डेटा, यहाँ पे 20 आया, काउंट की वैल्यू 1 से क्या हो गई? 2. तो 1 किसने किया? ऑब्जेक्ट 1 ने. 2 किसने किया? ऑब्जेक्ट 2 ने. अब जब आप ऑब्जेक्ट 1 डॉट शो डेटा करोगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 डॉट शो डेटा, तो नम की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी. और काउंट की वैल्यू भी नम की वैल्यू कितनी आएगी? 10 आएगी. और काउंट की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी. और सेम थिंग जब आप ऑब्जेक्ट 2 डॉट शो डेटा करोगे तो नम की वैल्यू कितनी आएगी? 20 आएगी. और काउंट की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी. Why? Because count is shared between all the object of a sample class. Getting my point? See here, count 2, object 1 num, object 2 num, 20, here 10. So basically by seeing this example, what we can say, static belongs to class, non-static belongs to an object.
तो अगर नॉन स्टैटिक मेंबर है वो हमेशा किसके साथ काम करेगा, ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करेगा, और अगर स्टैटिक डेटा मेंबर है या मेंबर फंक्शन है वो हमेशा किसके साथ काम करेगा, क्लास के साथ काम करेगा। तो इन दिस एग्जांपल वी आर हैविंग बोथ, हियर वी आर हैविंग count as a static data member and num as a non-static data member. So this num belongs to a object whereas this count belongs to a class. Same thing, show data and get data are the non-static member function of a sample class. They are always called using object name, but get count is a static data member of a static member function or data member, whatever you say, static member function of a sample class. It can be only invoked using class name. What I write, sample colon get count. तो जैसे sample colon get count करोगे तो cout count की वैल्यू कितनी आएगी 2, और जैसे cout less than num करूँगा तो it will flash an error, क्योंकि पहला क्वेश्चन क्या अराइज होगा कि ये num कौन सी ऑब्जेक्ट का है, बिकॉज इसको कॉल आपने कैसे किया, sample colon get count. तो here we are not passing any object to the get count function, because get count is a class member function whereas get data and show data are instance member function. तो वो हमेशा इंस्टेंस के साथ काम करेंगे और ये हमेशा क्लास के साथ काम करेंगे। इसलिए ऑब्जेक्ट 1 के अंदर 10 है, ऑब्जेक्ट 2 के अंदर 20 है, और काउंट जो है देयर विल बी अ सिंगल कॉपी ऑफ दिस काउंट विच विल बी शेयर्ड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सैम्पल क्लास। इसलिए हमको ये काउंट को अलग से डिफाइन करना पड़ा। व्हाई? बिकॉज दिस इज क्लास डिक्लेरेशन, और जब क्लास को डिक्लेयर करते हो तब कभी भी कोई स्पेस एलोकेट नहीं होता। स्पेस कब एलोकेट होगा, जब आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो सिर्फ नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स के लिए स्पेस एलोकेट होगा, एज इन द केस ऑफ दिस प्रोग्राम ऑब्जेक्ट 1 इज allocating space for num and object 2 is allocating space for num, बट काउंट के लिए स्पेस तो एलोकेट नहीं हुआ, क्योंकि ना तो ऑब्जेक्ट 1 के अंदर हुआ ना तो ऑब्जेक्ट 2 के अंदर हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि काउंट क्या है, स्टैटिक। स्टैटिक मतलब देयर विल बी अ सिंगल कॉपी विच विल बी शेयर्ड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सैंपल क्लास। तो काउंट को आपको अलग से क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। तो इंट डेटा टाइप क्लास नेम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर काउंट सेमीकोलन, दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ a static member variable. There will be a single copy which will be shared by all the object of a sample class, and static member functions are always called using class name because they belongs to class, not to an object. तो cout less than count करोगे तो it will display 2, but cout less than num करोगे तो it will flash an error. Why? What he will say कि ये num किस object का है. I cannot write obj1 dot get count ना. Why? Because get count is what? Get count is a static member function, and static member function are always called using class name. Why? Because they are belonging to a class, not to an object. ठीक है. तो moral of the story is, if we are talking about static, it means we should talk in the terms of class. अगर data member है तो वो class का होगा. क्लास अगर कितनी है, एक क्लास है तो कितना डेटा मेंबर हो, कितनी कॉपी बनेगी, सिंगल कॉपी बनेगी. सेम विद द केस ऑफ मेंबर फंक्शन ऑल्सो. ठीक है. नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर, स्टैटिक फंक्शंस कैन हैव एक्सेस टू ओनली अदर स्टैटिक मेंबर्स, डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास, whereas non-static member function, whereas non-static members can have access to a static as well as non-static member of a class. ठीक है. क्योंकि देखो जैसे आप ऑब्जेक्ट डॉट गेट डेटा करो, गेट डेटा इज व्हाट, नॉन स्टैटिक. नॉन स्टैटिक को कोई मतलब, नॉन स्टैटिक को नम तो पता लग गया कि ऑब्जेक्ट 1 डॉट अगर गेट डेटा किया तो नम इज बिलोंग्स टू ऑब्जेक्ट 1. तो अगर काउंट की अगर अपन बात करेंगे तो काउंट में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं. व्हाई? बिकॉज देयर विल बी अ सिंगल कॉपी ऑफ दिस काउंट. इसको दिस से मतलब नहीं, ऑब्जेक्ट से मतलब नहीं. तो काउंट प्लस प्लस मतलब एक ही सिंगल कॉपी है जिसको आप काउंट प्लस प्लस कर रहे हो, तो इट विल बी एक्सेसिबल बाय द नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर, non-static member function of a class. But if we talk about static, आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ अपन है, whereas non-static member function can have access to a static as well as non-static member of a class, as in the case in the example we are having get data. Whereas static function can have only access to the static members. Means get count is what, static member function. When I write cout less than, यहाँ कोई confusion नहीं है. There will be a single copy of this count which will be displayed. But यहाँ पे जैसे आप cout less than num करते हो
तो कंपाइलर भी फ्लैश एन एरर कि पहला क्वेश्चन अराइज होगा ये नम किस ऑब्जेक्ट का है, बिकॉज गेट डेटा इज व्हाट, इट्स अ क्लास मेंबर फंक्शन एंड इट इज ऑलवेज कॉल्ड यूजिंग क्लास नेम नॉट द ऑब्जेक्ट नेम. ठीक है. स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन नॉट एक्सेस दिस पॉइंटर that we have already discussed. A static member function can be called using class name, that is class name colon static member function name. This is a general syntax to call the static member function of a class. Here we are writing sample colon get count. Fine. So this is static member that we have discussed. Any doubt you can ask me in the comment section, or you can WhatsApp me on 8085908888. I will try to reply the answer within 24 hours. Go through this every point. This is very important. This is very 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 important, static members, because ये सारी चीज़ें आपको जावा में भी सारी जावा में भी यूज़ होंगी, पाइथन में भी यूज़ होंगी, और एनी अदर object oriented programming language. You should able to differentiate static members and non-static members. These are very important. The bottom line moral of the story is static members means we are talking about class, non-static members means we are talking about object or instance. इसलिए हमने static int count के सामने क्या लिखा, static member, whereas int num के सामने हमने क्या लिखा, non-static or instance variable. Why? Because objects are इंस्टेंस ऑफ अ क्लास. जितने इंस्टेंस बनते जाएंगे उतने नम की कॉपी बनते जाएगी, और काउंट की कितनी कॉपी बनेगी, देयर विल बी अ सिंगल कॉपी विच विल बी शेयर्ड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सैंपल क्लास. स्टैटिक non-static member function can access static as well as non-static member of a class, whereas static member function can only access the static members of the class. Here we have already seen in the get data as well as show data also. Show data is also accessing num as well as count. Means non-static member function is accessing static as well as non-static members. Same in the case of get data also. But in the case of get count, now get count becomes the static member function, so it can only access the static members. तो count में तो कोई दिक्कत नहीं आई. cout less than num किया तो it will flash an error. Okay, I think we should stop here. Go through this. Any doubt you can ask me. Thank you.